let me get in Ameek Jamai. Ameek Jamai, Akhilesh Yadav says, let's go back to the old parliament. Now, when you raise questions about the leakage in parliament, it's just your obsession with somehow running down the new parliament, any effort by Modi Sarkar becomes so visible and apparent because you had a problem with the national emblem, the lions were too aggressive for you, you had a problem with the fact that there was the Sengal that was placed, you had a problem with the entire central vista, as Gaurav Bhatia has pointed out. Every step of the way, it's been like finding one fault or the other. The fact of the matter was that the old parliament building was old. It was a 93 or 96-year-old building. There were problems. There wasn't enough room. And we've gone into this entire issue of how the previous governments, previous speakers had also recommended that a new building was necessary. But even today, pot shots are taken on the fact that, oh, let's go back to the old building. The new building is not good enough. My question is, if you're so worried about that little seepage or the water dripping because there is a skylight and the adhesive had moved a bit, why did you not raise the issue about the loss of lives in Delhi itself on Arvind Kejriwal government and its responsibility? At that time, the only question that was demanded by Akhilesh Yadav is, when will you take action against the officials? Why officials? Everywhere else you want Modi to resign. In Delhi, why is it only about officials? Isn't there politics there? देखिए, मेरे नेता अखिलेश यादव जी ने जिस तरफ इशारा किया है नाविका जी, वो एक ऑर्गेनाइज जो करप्शन है नरेंद्र मोदी की रिजीम का पूरे देश में, क्योंकि वो खुद अखिलेश यादव जी इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से आते हैं। आप गौरव भाटिया जी से ठीक है, हमारा विरोध बहुत चलता है, लेकिन जो नया चीफ मिनिस्टर का ऑफिस बना है लखनऊ के अंदर, मतलब आपको लगेगा कि वो यूके का कोई पार्लियामेंट का एक हिस्सा यहां पे बन गया है। एक क्वेश्चन आज तक उस बिल्डिंग पे नहीं आए। तो सवाल ये कि जो सेंट्रल विस्टा है ये एक ऑर्गेनाइज करप्शन का सिंबल है और ये पहले बारिश में दिख गया है। दूसरा आप आ जाइए, गौरव जी हमारे सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़े वकील माने जाते हैं और ये खुद भी कहते हैं कि वकालत करते हैं। क्या मामला आया है बिहार में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पुल, छपरा में और सिवान में तो एक दिन के अंदर 6 पुल डेमोलिश हो गए। और कितनी ईमानदारी की बात चिराग पासवान जी ने करी है, उन्होंने कहा कि जो भी भ्रष्टाचारी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। एक केंद्रीय मंत्री हैं इनके, वो कहते हैं कि इसमें करप्शन की वजह से नहीं हुआ है, ये तो जो बारिश है ना, ये कोई माफिया है, ये कोई विलन है, इस वजह से हुआ है। आप सोचिए कि मोरबी का जो पुल का हादसा है वहां से करप्शन की शुरुआत होती है। बिहार में 12 पुल, नाविका जी सोचिए कितना बड़ा विषय है। आप तो हमेशा इस बात को उठाती हैं। चिराग पासवान जो इनके बड़े नेता है वो ये कह रहे हैं कि उनको भ्रष्टाचार उसके अंदर दिख रहा है। तो सवाल ये है कि जितने नए आपने इमारतें बनाई हैं, पहली बारिश में उसका जो पूरा भंडा फोड़ हो गया है, तो आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, आप पढ़ाई नहीं दे पा रहे हैं, आप शिक्षक नहीं दे पा रहे हैं, आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहे हैं, आप हाईवे नहीं बना पा रहे हैं। क्या हुआ हाईवे का, पूर्वांचल हाईवे का? नाविका जी कभी भी आप लखनऊ से आप गाजीपुर जाएं, एक रेस्टोरेंट के अंदर 2 मिनट के लिए आप बैठेंगे नहीं, जिस तरह की उसका क्वालिटी, जिस तरह का उसका हाईवे का जो लेवल है। तो पूरा करप्शन का अंबार है और वो बारिश में पहली बार आपके सामने आ गया। तो पुल वाले सवाल पे मैं चाहूंगा कि जो 12 पुल 1 महीने के अंदर गिर गए, ये जो भ्रष्टाचार का इशारा है, कुछ इस पे जरा भारतीय जनता पार्टी के लोग जरूर इस पर, जो मैं चाहूंगा कि उस पर रोशनी डालें। गौरव भाटिया। So Navika, I noticed whether it was Sanjay Jha or the Samajwadi Party spokesperson, they are not willing to speak, not even a word on the 3 lives that we have lost of very young, promising student aspiring to serve the country by becoming the officers of the Indian Administrative Services. This is very sad. This is the duplicity that is so very visible, but I will, like a responsible spokesperson, respond to the statements that have been made. He was talking about highways. Let me tell you, the maximum number of highways are coming up during
the regime of Yogi Adityanath ji. The Ganga Expressway is also near completion now. But I must show a picture. This is a picture. Just see the car. This picture is showing the stretch from Agra to Lucknow, inaugurated by Akhilesh Yadav. And this car is down in the dumps 50 feet. Why? Because the expressway caved in. This was the kind of construction and corruption prevailing during the Samajwadi Party. And I'm sure the Samajwadi Party spokesperson will have no answers. Corruption? You will talk about corruption? Riverfront development. There is a CBI investigation that is going on. Akhilesh Yadav could not even act as a half chief minister. There was Lokayukta reports against Mayawati. Akhilesh Yadav decided not to act. Are you aware of the PDC scam? Ration meant for the poor was siphoned off by the minister in the Samajwadi Party government. The Supreme Court ordered a CBI investigation. नेहरू जी तक अभी And चले last जाएंगे। but not the least, मैंने जो अभी विषय you remember उठाया आपके Davika पास- 2017 बीच में नहीं मैंने आपकी बात सुनी, आप भी सुनिए और जवाब दीजिए अगर आपके पास है तो. You remember Safai Mahotsav, that ugly brazenness of Samajwadi Party wasting exchequer's money. After 2017, have you seen any Safai Mahotsav in Safai? No, because now they will have to spend their own money. We are all about accountability and they are all about corruption. They come out to ask us questions, but when we ask them any questions, they will not answer. That is the difference. And I that's- say this with that's some also the responsibility. frustration of the Yes, people of yes, India, Things that happen. nobody Things answers have been their corrected. questions. I think we should at least learn lessons from that.